All right. Good morning, everyone. So, I think we covered a study trading part, right? So, how do we create a trades, and what are the things that we can do with the trade, virtual trades? What are the difference between platform trade, virtual trades? How the virtual trades are managed by JVM versus the platform trade managed by operating system? What is the difference? How many threads that we can create with the virtual threads? We have millions of such kind of threads, right? Whereas platform threads are limited to your number of cores that we have, which is managed by operating system, right? Then we saw the when should I use a virtual thread, when should I use a platform thread as well, right? So, can somebody tell me when should I use a virtual threads versus the platform thread? And when we have more of IO intensive operations, then we'll be using virtual threads. Mm-hmm. And when we have computation intensive work, then we'll be using platform threads. Yeah. What do you mean IO intensive work? कैसे कौन से IO intensive work होते हैं The हमारे? file handling operations as well as database operation, connections operations Hmm. uh, between server and the client when lot of connection request or lot of request which should be responded and we need high throughput, uh, Right. then we'll be using IO intensive virtual thread. Right, exactly. Okay, awesome. So IO इंटेंसिव मतलब नेटवर्क कॉल वगैरह कर रहे हो आप, डेटाबेस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हो, तो दीज आर ऑल IO कॉल्स जहाँ पे हमें वेटिंग करना पड़ता है एज एप्लीकेशन यूजर को until we get a response. So in that case, we can have the virtual threads because virtual threads are designed for IO kind of operations where you keep on waiting for response from the downstream services, right? So whereas जो platform threads होते हैं, they are more powerful doing your CPU computation, CPU intensive works. Like you are doing encryption, decryption, doing some performing some logic, you are doing multiple loops in iterations, you are doing some image processing, you are doing some again all of them which are related to CPU related stuff will be most be used for the platform threads, right? So that's the major difference that you should be remembering it, right? When somebody asks you to which version of Java you have used, you can definitely proudly say you have used the Java 21. And if somebody asks what is the feature that you used in Java 21, you can definitely talk about the virtual threads. Okay. So that will give the age for you, apart from the other students who will be other people who are be coming to the interview because you have been using Java. सभी लोग Java 21 मेंशन करते हैं रिज्यूम के अंदर, but nobody knows Java 21 के अंदर क्या है, बस यूज किया है मैंने, बस यूज किया है, but they don't know the what is there in Java 21, right? But you have the age guys now to talk about the virtual threads, especially एक तो पहले थ्रेडिंग कोई सिखाता नहीं है, राइट? अगर सिखाए तो वो भी मिनिमम लेवल थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, बस दैट्स इट. नोबडी टॉक्स यू द एग्जीक्यूटिव पुल फ्रेमवर्क थ्रेडिंग, कैसे यूज करना है प्लेटफॉर्म थ्रेड, कैसे पुल करने पड़ते हैं, वर्चुअल थ्रेड्स क्या होते हैं, नोबडी गोइंग टू टॉक टू यू, राइट? So just make utilize it in your resume to highlight your potentials that we have in front of your recruiters and managers who is going to take your interviews, which will give you the extra benefit for you, you only in a hiring process. Okay. All right. Now, so today we'll be starting a set of a spring, right? Now, as a spring case, spring is a framework, right? Now, so it's a framework. Now, what do you mean by framework, guys? Can somebody tell me what do you mean by framework? What is framework? Framework क्या होता है? Set of rules or procedures which we follow to implement. Okay. Anything else? Kiran, Swapnil. Sir, a template we can say. हम्म. मैंने हाइवर्ड फ्रेमवर्क देखा था, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको फ्रेमवर्क क्या है. Framework क्या होता है guys? It's a set of tools, right? You have a set of tools, libraries, right? Yeah, set of classes, interfaces, which helps to design slash develop the applications
in faster way, right? कुछ लाइब्रेरीज, कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के हिसाब से, एंड आप उसको यूज करके you can develop the applications faster, as well as you can customize it based on your requirement, based on your requirement, मतलब आप उसने कुछ तो प्रोवाइड किया इनबिल्ट, पर उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो इफ यू वांट टू डू समथिंग बिहेवियर, राइट? सो इट दिस फ्रेमवर्क्स आर हेल्प फॉर योर फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क्स आर यूज फॉर योर फास्टर डेवलपमेंट। आपने यहाँ आपने जेडीबी से सीखा था, राइट? जेडीबीसी थ्रू करते हैं जब हमने जेडीबीसी सीखा, तो उसके अंदर हमने नॉर्मल क्वेरी लिखा, कनेक्शंस क्रिएट किए, स्टेटमेंट क्रिएट किए, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, फिर रिजल्ट सेट आया, फिर उसको मैप किया, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कनेक्शन क्लोज करना पड़े, सब कुछ करना पड़ा। फिर हमने हाइब्रिड क्यों यूज किया गाइस? बिकॉज ऑफ फास्टर डेवलपमेंट। क्यों? हाइब्रिड ने क्या प्रोवाइड किया था? ओआरएम फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें टेक केयर करता है। आपको बस क्या करना है उसको, मुझे हाइब्रिड को बोलना है कि मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 1 है, दैट्स इट। बस इतना करो, बाकी सब क्वेरी एग्जीक्यूशन, कनेक्शन क्रिएशन, फाइंडिंग द क्वेरी, गेटिंग द रिजल्ट, मैपिंग दैट रिजल्ट बैक टू योर ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय होम, हाइब्रिड। बराबर है? तो ये क्या हो गया, आपका फास्टर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या हो गया? तो हमने क्या किया, उसके कुछ सेटअप लाइब्रेरीज क्लासेस यूज किए जो हेल्प करे आपको टू डू सम फास्टर डेवलपमेंट हियर, and abstracting out all the what is happening behind the scene, right? So it is used for your faster development, and you can also customize it। जैसे बोला यहाँ पे कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन योर नीड। जैसे हमने एंटिटी क्लास बनाया था, एट द रेट एंटिटी क्लास, तो टेबल हमने बनाया था स्टूडेंट का, तो मुझे चाहिए था कि हम हैमर डायरेक्ट यूज कर सकता है जो भी चाहिए उसको, बट आई कैन ऑल्सो कस्टमाइज एट द रेट कॉलम, एट द रेट टेबल, कौन से टेबल के साथ मैप करना है, तो हमने कस्टमाइजेशन भी किए थे। तो क्या है वो कस्टमाइजेशन, नहीं तो क्या है, राइट? सो दोज फ्रेमवर्क्स आर हेल्पफुल फॉर योर डिजाइनिंग योर थिंग्स in a faster way, as well as it also provides you the customization we can do based on what you need, right? So that's the beauty of your spring framework, hibernate framework. But in general, frameworks are used for your development of your faster things, okay? So now similar जैसे हमने hibernate यूज किया था, they have spring, right? तो सिर्फ spring क्यों है फिर? तो why do we need a spring kind of framework, right? Why is spring? अभी स्प्रिंग क्यों आया मार्केट के अंदर, राइट? पहले क्या था सर, जिसके जिसके क्या प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से स्प्रिंग आया मार्केट के अंदर? तो पहले हम मार्केट के अंदर, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव वर्क अपॉन इट, आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली यू माइट नॉट हैव वर्क अपॉन, बट आई माई सेल्फ वर्क ऑन दोस टेक्नोलॉजी इन द पास्ट, आई नो द पेन्स of those technology using them in a day-to-day development process, like we had something called as the servlet containers, we have servlets, we have EGB, we have struts. These are the frameworks which are there in market to develop your web applications in the with the help of your Java programming language. Now all these technologies, servlets, EGB is your enterprise Java applications, okay? Enterprise Java Beans. So enterprise Java Beans is one of the oldest technology in Java, which was used to develop your enterprise application, big scale applications in Java. And it has a lot of issues in managing. It needs app server and a lot of configuration. You have to do a lot of code, repeated code. It's not properly clean code and everything. Dependency has to manage by yourself. So there are a lot of problems with the this servlets and EGB that has been developed there in the past. And then we had something called the strut framework as well, struts, which also came to the market for again for some sort of MVC based application development. But again it also lacks lot of issues with loosely coupled design. Then proper dependency managers what wasn't not there. Again, developer has to do a lot of things in order to work in struts, right? So that's why there's a lot of limitations in terms of design and scalability of those frameworks. We then we had something called the Spring framework, which came into the market, right? Again, Spring का जो initially जो first version मतलब it has introduced in 2002. Okay, now अभी almost 20 साल हो गए framework आने, 20 नहीं कितना, 22 23 साल हो गए। नया नहीं है guys, this has been in the industry from last 20 years। ठीक है, Spring is has been industry in the last 20 years, imagine, right? This is not a new thing, okay, this is the old thing, but ठीक है, इसका जो ऑफिशियल पहला वर्जन जो मार्केट के अंदर आया था वो आया था 2004 के अंदर, ठीक है? एंड द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दिस फ्रेमवर्क कॉल्ड एज जॉन रॉडसन, ठीक है?
जिसने फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर लेके आया था, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। एंड इसका पर्पस यही था कि जब मैं लेके आऊंगा, आई नीड समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइट वेट थिंग्स, बिकॉज ईजीबी एंड एवरीथिंग दीज आर वेरी वेरी हेवी वेट। हेवी वेट मतलब क्या होता है गैस, यहाँ पे आपको अगर ईजीपी रन करना है तो यू हैव टू नीड एप्लीकेशन सर्वर, जैसे जेबॉस ग्लासफिश करके जो सर्वर्स होते हैं, we need that kind of application servers in order to run those application EGP servers, and you have to do lot of coding, lot of configuration, lot of stuff, right? So the idea of the spring was to, come up with some lightweight things which is easy to integrate, easy to start, everybody can utilize it for their day-to-day application, right? So this guy, John Dodson, came in one of the best idea of the Spring in 2004, which was the official release of the Spring 1.x. So initial version was the Spring 1.x, which was released in 2004. Now over a period of time, this has been evolved a lot, right? And currently जो मार्केट के अंदर वर्जन चल रहा है वो है 6.x, ठीक है, मतलब स्प्रिंग 6 चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। लेटेस्ट वर्जन इज स्प्रिंग 6 एंड 7 अभी डेवलपमेंट चालू है, उसके अंदर कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पर 6.x is a kind of LTS version, long time support version, and it's a stable version that nowadays we use in the applications. Okay, so if you look at the 20 years of time, it has 6 version has been evolved, right? And when it initially started, it was just started as a lightweight framework. Any questions? No, sir. No, Ah, sir. okay. No, All right. sir. All right. So that was a lightweight framework which was designed in the back in 2004 by the guy called as John Dodson, and his idea was to develop something called as uh, a framework which can be where more modularized. Okay. Second, it should be very much lightweight. ओके, लाइटवेट होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए। क्यों मॉड्यूलर क्यों होना चाहिए? आई डोंट वांट टू इन्फोर्स एवरी डेवलपर टू टेक ऑल दिस लाइब्रेरीज। तो मैं कैसा बंच बनाऊंगा जिसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड करूंगा एक साथ, that even if I don't need it, I still going to get it. तो वो ऐसा ऐसा बनाए अपने framework, तो obviously going to slow down your applications, right? Which even if it is not required. So that's where we need to have a modular design where I can have a independent small model can be used my application, जिसकी जरूरत है उतना यूज करना है मुझे, बाकी की जरूरत नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो डिपेंडेंसीज होते हैं या आपके जो लाइब्रेरीज होते हैं, आप जितने चाहिए उतने यूज करते हो, दैट बिकम्स आपका डिजाइन जो होता है थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट क्लबिंग एवरीथिंग इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी आर जस्ट ओनली रिक्वेस्टिंग मुझे ये चाहिए बस इतना ही दे दो, ये चाहिए बस इतना ही दे दो। तो स्प्रिंग ने क्या किया, अच्छे से अच्छे एक प्रॉपर मॉड्यूलर फ्रेमवर्क बनाया, जो आप क्या कर सकते हो, जितना चाहिए आपको उतना यूज कर सकते हो, एंड हैज बीन इवॉल्वड अ लॉट, आई विल टॉक अबाउट दैट इन द वेबसाइट, बट दिस हैज बीन इवॉल्वड लॉट एंड विद द मॉडर्नाइजेशन it is a lightweight container. Now it's a lightweight container. Now it comes with some sort of the concept called as a containerization. Now what is containerization? There is something called as IOC container. Okay. So Spring जो है ये है IOC based container. IOC based container मतलब क्या होता है? What is IOC guys? Anybody knows what is IOC? Anybody know? Inversion of control. So we have something called as a inversion of control. What is inversion of control? What do you mean by inversion of control? ठीक है, आई टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो आईओसी कंटेनर, तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज आईओसी कंटेनर। नाउ इनोजो कंट्रोल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जब आप डिजाइन करते हो कोई भी सिस्टम, तो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल विच इज वेरी बॉटम, विच टॉक्स अबाउट यू नो your application flow will not be decided by your programmer, but it will be decided by the framework, ठीक है। सो जनरली इफ रिमेंबर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मूवी मूवी एप्लीकेशन, राइट, हमने मूवी का एप्लीकेशन बनाया था कोर जावा वाला, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था गाइस, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने एक कुछ तो मूवी सर्विस क्लास बनाया था, उसके अंदर हमने हैश मैप यूज किया था, याद है, टू स्टोर द मूवीज।
और फिर हमने क्लाइंट के अंदर क्या किया था, मूवी सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, फिर उसकी डिपेंडेंसी हैश मैप के हमने बाहर से पास की थी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड एवरीथिंग वाज, who is doing who was doing that object creation, who is injecting the dependency, is a programmer. तो जो एप्लीकेशन का फ्लो या ऑब्जेक्ट क्रिएशन का फ्लो कैसे करना है, इज इज ड्रिवन बाय द प्रोग्रामर, बराबर है। तो जब प्रोग्रामर खुद ये लिखता है कि मुझे ये पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इसको इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस है या उसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब उसको ऑब्जेक्ट बनाया बट उसको काम होने के बाद डिस्ट्रॉय भी करना है, यूटिलाइज भी नहीं करना है, राइट। सो वी टू क्रिएट समथिंग सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, राइट। वी हैव टू नो द लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज सो फार वी आर डूइंग बाय द प्रोग्रामर, बाय डूइंग बाय द प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है, इट इज कंट्रोल बाय हुम, प्रोग्रामर। इट हैज बीन कंट्रोल बाय प्रोग्रामर कि मुझे एप्लीकेशन के साथ कैसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज सी मैं डिसाइड करता हूँ ना कि मुझे ये पर्टिकुलर मेथड कॉल करनी है, राइट। आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, आई हैव वन ऑब्जेक्ट है व्हिच नीड्स अनदर ऑब्जेक्ट। अगेन जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई हैव टू पास दैट ऑब्जेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, बिकॉज आई हैव डिपेंडेंसी टू बी रिजॉल्व, राइट। सो हमने बहुत बार किया था, जैसे कि हमने कार था, कार के साथ इंजन था। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट द कार आई नीड टू हैव ऑब्जेक्ट ऑफ द इंजन, बराबर है। तो इंजन कार का ऑब्जेक्ट हमने खुद बनाया था, फिर हम उसके कार का ऑब्जेक्ट बना के उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया था। तो वो मैनेजमेंट कौन कर रहा था, एज अ प्रोग्रामर आई एम डूइंग इट, राइट। बट यहाँ पे मैंने से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो सो फार वी हैव बीन कंट्रोल योर फ्लो अपन एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना, देखें। सो फार प्रोग्रामर वाज डिसाइडिंग कि मेरा एप्लीकेशन का फ्लो कैसे रहेगा, कैसे मेरा पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर मैं उसको कैसे इंजेक्ट करूंगा। तो दिस इज ऑल डिक्टेटेड और रिटर्न बाय योर प्रोग्रामर। वेयर एज जैसे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे इसका नाम के अंदर ही इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा था, प्रोग्रामर। अब कंट्रोल प्रोग्रामर नहीं करेगा, इट विल बी डन बाय योर फ्रेमवर्क। इन्वर्जन मतलब क्या है, उसको रिवर्स, रिवर्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल अभी रिवर्स करना है मुझे, किससे, प्रोग्रामर से, फ्रेमवर्क से। प्रोग्रामर से कहा जाना है, फ्रेमवर्क के पास। सो द फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन, द फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन इज कंट्रोल्ड बाय फ्रेमवर्क। Object management is going to be done by framework. As a developer, you don't have to worry about the flow of application. ठीक है, मतलब सर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे। We will be not writing a single line of code जहाँ पे हम न्यू करेंगे। अगेन जो सिंगल लाइन जो बोलता हूँ मैं, बट मेन जो क्लासेस है जहाँ पे हमको कंट्रोल करना है, those classes will not be instantiated by you. It will be instantiated, it will be created by the Spring framework. We'll just tell Spring framework, hey Spring, I need object of this, and he will provide the object. I'm not going to take care of the object creation. Okay, so that's where the flow of the application is going to be changed completely. So far we have been driving by yourself everything, but now framework क्या बोलता है, आई एम IOC कंटेनर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फ्रेमवर्क, जहाँ पे तुम जैसे एप्लीकेशन रजिस्टर करो मेरे ये ऑब्जेक्ट्स है एंड इसके ऑब्जेक्ट्स तुम्हें मैनेज करने हैं, ऐसे मैं बोल दूंगा स्प्रिंग को। और जब भी आपको चाहिए आप मुझे से पूछ लो, मुझे तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे लेके आना है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बट यू हैव टू जस्ट एट एप्लीकेशन स्टार्ट आपको बताना है मुझे कि ये ऑब्जेक्ट मुझे कंसिडर करने हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिस्ट्रॉइंग, योर कॉलिंग योर मेथड्स एंड एवरीथिंग will be taken care by your framework. Okay, so that's where the IOC container, this is one of the interview question कि what is IOC container, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए IOC container मतलब क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल आपका जो है, rather than driven by the programmer, it will be driven by fully by the framework like a Spring, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का फ्लो प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा कैसे फ्लो होने वाला है। आप जैसे उसको बताओगे मुझे ये ऑब्जेक्ट है उसको मैनेज करने, दैट्स इट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय योर स्प्रिंग। यू जस्ट हैव टू आस्क, हे स्प्रिंग, आई नीड दिस ऑब्जेक्ट, यू टेक केयर ऑफ दिस।
which is provide the object. Okay, so this was the idea behind the IOC container or IOC principle of इंजेक्टिंग डिपेंडेंसी. नाउ ये जो आईओसी है, आईओसी कंटेनर है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल. ओके गाइस, दिस इज अ प्रिंसिपल. बट दिस प्रिंसिपल कैन बी, दिस कंसेप्ट जो है जहाँ पे मैं बोल रहा ना कि ये जो कंसेप्ट है जहाँ पे आप खुद एप्लीकेशन का फ्लो डिसाइड नहीं करोगे, somebody will call you. Yeah, basically somebody will call you, whatever you need, you just ask them, they will call you to provide that, provide those things whatever is required, right? This concept can be implemented by multiple patterns. Like there is something called as a event based pattern hota hai. So there is event based design where you can implement similar things. There is something called as callback patterns hota hai जहाँ आप use कर सकते हो. There is another pattern called as a dependency injection pattern. Now, dependency injection is a design pattern, whereas IOC is a principle. Okay, so this philosophy of IOC can be implemented using event-based systems, using callback-based systems, using dependency injections. So dependency injections again can be done by your constructors. It can be a method, it can be your property, multiple types of way we can define the dependency injection, right? But at an idea where is IOC container hai, it's a principle which tells you the flow of application is going to be controlled by framework rather than programmer. And that principle of having flow being controlled by the application or framework can be implemented with the help of event based system, can be implemented by the callback system, or can be implemented by the dependency injection. There's another something called as a service lookup करके एक होता है. There's a service lookup करके भी concept होता है जो use करके you can implement similar framework. ठीक है. So what we'll be primarily focusing on, we'll be focusing on the dependency injection in Spring. Okay, fine. Any questions so far? So far so good. Type one in the chat if you have understood so far the concepts of the IOC and what is framework. Why do you need a framework? Right? What is IOC container? All right. Awesome. Now स्प्रिंग जब बनाया था, राइट, स्प्रिंग बनाया था तो उसके अंदर भी एज आई मेंशन दिस वाज डिजाइन फॉर अ मोर मॉड्यूलर डिजाइन. मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे मॉडल उन्होंने डेवलप किए, जो चाहिए आप उसको एज अ डिपेंडेंसी ऐड करो आपके लाइब्रेरी की, वो लाइब्रेरी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, राइट? सो स्प्रिंग दैट वे इट वाज वेरी लाइट वेट एंड इट्स बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर डिजाइन दैट हैज बीन प्लेस्ड इन द स्प्रिंग, right? And given that has been evolved a lot in the recent period of time, the community support of the Spring is very good. We have very good documentation on the Spring because since this has been in the industry from last 20 years, this has been has been used across a lot of projects. Lot of development has been happened on the Spring. So even if you face any issues or anything, you'll find a solution on internet. Even if you face any issues, you have to just ask the right questions to the internet. Hey, I'm facing this issue, how can I solve this, right? And there's a lot of good community, a lot of good documentation of the Spring that can be used to get your help. So that's why it's very popular in the market. Okay, see, नया कुछ भी आता है इंडस्ट्री के अंदर, अगर उसको यूज करना है, यूज करेंगे, बट उसके अंदर इश्यू आएंगे तो कौन सॉल्व करेगा? जिसने डेवलप किया उसको पता होना चाहिए ना कि इश्यू सॉल्व करना कैसे करेंगे. So we need a people who can help us, right? Given the Spring framework is last in 20 years long time, people have used the framework multiple times, have faced a lot of issues, and they have fixed the issues, and a lot of solutions has been placed in the internet, right? So you'll also always get help from the internet if you face any issues. Okay, so that's why it's very popular as well, along with the lightweight and modular base, but it really has a good community and everything. Okay, now what are the features of the Spring, right? So why Spring has got famous, right? So we just talk about the features at a high level, right? As I mentioned, some of them like IOC container, which is a core of your Spring. इसके बिना कुछ नहीं चलेगा. ये core है आपका, इसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है? So IOC container, we have a dependency injection, right? It also supports some data access layer stuff. मतलब क्या है सर? जैसे मैंने Hibernate यूज किया था, right?
we have used the Hibernate, but उसके बाद हमने Hibernate हमने यूज किया था ORM framework करके, right? So it also has support sort of the data JPA, Spring Data JPA करके, which can be used. We have the, even if you want to use the Hibernate, you can use it. You want to use JDBC, you can still use the JDBC here as well. So it has support for multiple things, and it has created, you know, lot of simplified design to work with your databases, right? With data JPA. So it has a data access stuffs as well, right? Apart from that, it also supports some called as a web MVC frameworks, right? Web MVC frameworks मतलब क्या? अगर आपको कल जाके सर्वर बेस्ड रेंडरिंग करनी है, सर्वर बेस्ड रेंडरिंग मतलब क्या होता है guys? If you want to develop the server side, you know, web applications, so you can use a web MVC framework. So MVC is like your model view controller. The long form is model view controller. तो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can develop the GUI as well as their processing at the server, and client request जब करता है तो उसको HTML पेज रिटर्न किया जाता है, और जो भी एक्शन होगा वो बेसिकली बैकएंड सर्वर के ऊपर हो जाएगा. सो अगर आपको ऐसे कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं MVC बेस्ड, राइट, इट आल्सो हैज सपोर्टेड विद द as a plugin called as web MVC, where you can add the dependency and you can still develop some sort of those applications as well. Okay, so that's how it has been designed in the MVC framework, right? Now we also have support for transaction support. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए उसने अच्छा सपोर्ट दिया है, विच इज लाइक अ मोर अपन यूनिफाइड सपोर्ट. सही से यूनिफाइड, मैंने से यूनिफाइड मतलब एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रोवाइड किया, राइट? यू कैन ऑल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ एओपीज. व्हाट इज एओपी सर? इट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Okay, you can also do the aspect-oriented programming for your applications. What is aspect-oriented programming? We'll talk about it later, but it also supports something called as a aspect-oriented programming, right? It supports your authentication and authorizations, so authn and author patterns that has been supported. So it has very well integrated with, you know, different authentication mechanism, like you have, so you know, LDAP based authentication, we have database based authentication, you can have OAuth 2, which is very famous nowadays for your client credential grant flow, right? So it supports a lot of stuffs with the help of your you know, JWT tokens and other stuff. So Spring is very popular in terms of, you know, authentication authorization. It also have great security supports in order to build your security. Again, authentication authorization is part of security only, but it also has other good support in security aspect of it, right? It also has you know, some better testing support. और अब टेस्टिंग के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो टेस्टिंग फ्रेमवर्क का जो इंटीग्रेशन है स्प्रिंग के साथ बहुत अच्छे है. जैसे कि जे यूनिट करके एक फ्रेमवर्क है, we have something called as a Mockito framework, which are used for, you know, mocking the dependencies which are required for application. So that's another feature that Spring supports, right? We also have something called as a internationalization and localization. Anybody knows what is internationalization and localization? जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, राइट? जैसे वेबसाइट है, और वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, कभी कभी आपको पता है, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर देखना है, मराठी के अंदर देखना है, हिंदी के अंदर देखना है, तो आपके पास कुछ कंटेंट होते हैं जहाँ पे बटन्स होते हैं या कुछ फॉर्म्स होते हैं, बराबर है? तो फॉर्म के अंदर कुछ लेबल्स होते हैं. अब बाय डिफॉल्ट इंग्लिश के अंदर देता है, बट लेट से कोई बंदा आता है, उसको इंग्लिश नहीं समझ, उसको मराठी में देखना है, तो व्हेन यू चूज द मराठी, तो ये पूरा वेब पेज पूरा रिफ्रेश होता है, और यहाँ पे पूरा मराठी का फॉन्ट, मराठी का ये आता है, कंटेंट आता है, बराबर है? तो वो क्या है? इंटरनेशनल. दिस इज इंटरनेशनल. तो अगर आपको इंटरनेशनल करना है, आपकी वेबसाइट को इंटरनेशनल करना है, मतलब आपकी वेबसाइट लॉन्च करनी है मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा मल्टीपल लैंग्वेज के लिए, लाइक मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जापान, जो भी है, राइट? और उनको अगर सपोर्ट करना है आपका एप्लीकेशन के अंदर, तो ये ऑल्सो हैव सपोर्ट फ्रॉम द स्प्रिंग, यू कैन जस्ट कस्टमाइज डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल्स एंड दैट विल बी सॉर्टेड, टेक केयर ऑफ इट. ठीक है? सो it has a lot of good support in terms of your features and everything. Okay, I just listed few of them. There are a lot of other things that are there in Spring, and list goes on because he has been evolved from last 20 years. So you can't learn everything what has been developed in the last 20 years, right? So there are a lot of projects happening in the Spring which are, you know, more evolved, more simplified, more simplification to connect with different systems like Redis systems. You want to connect the Kafka, you want to connect with some other systems. So it has a lot of projects that has been created in the market, right?
So that's in nutshell what are the features of Spring if somebody asks you to know that okay what is IOC, what is dependency injection, data access, WebMVC and other stuff, right? So now given you talked about these things, right? How do we start sir? Now sir स्टार्ट करने से पहले एक बात करने आपको सो स्प्रिंग तो हमने देखा सर स्प्रिंग बूट क्या है फिर राइट इट्स ए नेचुरल क्वेश्चन कि अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग बूट क्या है आर दे सेम आर दे डिफरेंट right? So I'll just talk at a high level and then we'll see how do you do everything in the Spring, right? So Spring and Spring Boot difference. See, Spring was a framework which was designed in the very old era, right? Now, as we become the matured with development of a lot of frameworks, it has been evolved a lot, and people also started facing some of the issues, not issues, but there are certain patterns which has been evolved over a period of time. जैसे कि लेट्स से मुझे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो आई नीड दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी, ठीक है, ओके, बट ये डिपेंडेंसी मैंने डाल दी, but what else I need to configure? I need to configure their connection ports. I need to configure, the transaction associated with. I need to configure their data sources. So those objects has to be created. So as a developer, has to create a lot of configuration in terms of when you're integrating with. जैसे tomorrow I have a framework called as a web MVC framework. मुझे application बनाना है web MVC का. तो उसके अंदर भी मुझे I have to configure a lot of stuffs. तो ये क्या हुआ लोगों के थोड़ा सा मतलब ओवरऑल टाइम टाइम चीजें रिपीट रिपीट होने लगी हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पता है कि अगर मैं इस टाइप का एप्लीकेशन बनाऊंगा तो आई नीड दिस डिपेंडेंसी, ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाऊंगा डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन है मेरा तो आई नीड दिस डिपेंडेंसी एंड उसके मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। एक मिनट गाइस, आई जस्ट कम बैक। ओके ओके सो अगर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बनाने हैं तो वी नीड सेट ऑफ डिपेंडेंसी, वी नीड सेट ऑफ बीन्स टू बी कॉमन। सो उन्होंने एक पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ है डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप के, जैसे रेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हो तो रेस्ट के अंदर मुझे ये डिपेंडेंसी चाहिए, ये उसके बीन्स चाहिए ऑटोमेटिकली क्रिएट होने चाहिए। तो ओवरऑल टाइम क्या हुआ एक पैटर्न एस्टेब्लिश हुए, तो रादर देन डूइंग प्रोग्रामर पुटिंग ऑल द डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग, they have whatever done, they have just simplified the Spring. They have simplified the Spring, which is more of an opinionated framework, opinionated framework for doing a faster development, other than faster say rapid development. तो उन्होंने क्या किया, जिस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना उसके हिसाब से कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह उन्होंने क्या किए, कुछ स्टार्टअप प्रोवाइड किए, तो डायरेक्टली एक बार एक डिपेंडेंसी डाल दो बाकी सब कुछ चीजें वो टेक कर देगा आपको, ठीक है। तो रैपिड डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ ऑटोमेटिक चीजें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वी हैव दे हैव क्रिएटेड फ्रेमवर्क कॉल्ड स्प्रिंग बोट ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये रिमेंबर दिस इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग बोट आप यूज करते हो तो इंटरनल क्या यूज होता है, स्प्रिंग यूज होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बोट अलग है और स्प्रिंग अलग है, तो आप स्प्रिंग बोट यूज करे इंटरनली इट यूजेस ओनली स्प्रिंग, द कोर स्प्रिंग, राइट, दे आर नॉट डिफरेंट, इट इज जस्ट दैट स्प्रिंग के साथ बहुत सारी चीजें हमें मैन्युअली बहुत सी करनी पड़ती थी, कॉन्फ़िगरेशन वो सब करना पड़ता था। अब वो चीजें क्या हुई, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन किए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किया है स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत सारी चीजें, और सिंप्लीफाइड किए आपके डिपेंडेंसीज को, बिन क्रिएशन को, दे विल बी प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट ऑल द डिपेंडेंसीज एंड beans which are required for your application, right? So it has simplified a lot of things which has helped developers to do the rapid development rather than focusing on dependencies. And so Spring Boot bolta hai, you focus on your business logic, don't focus more on writing dependencies and everything. You take care of your business logic. Your focus should be writing the business logic rather than
managing the dependencies and interactions, configurations, and lot of stuff. So he has taken a lot of things from you, and you just focus on business logic. But as a student, you should first understand what is Spring. बराबर है ना? तो इसने तो कर दिया, बट क्या हो रहा है बिहाइंड सीन आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप स्प्रिंग बोर्ड अच्छे से सीखोगे, स्प्रिंग बोर्ड अच्छे से यूटिलाइज करोगे. बराबर है. सो वी नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट, राइट? सो नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ द स्प्रिंग. तो बेसिक के अंदर हम क्या सीखेंगे सर? जैसे भी आईओसी कंटेनर हमने बताया था, आईओसी कंटेनर है, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है, राइट? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के नाम कंस्ट्रक्टर कैसे इंजेक्शन कर सकते हैं, हाउ टू मैन क्रिएट सेटर इंजेक्शंस, राइट? हाउ टू क्रिएट अ बीन्स, राइट? नाउ व्हाट डू बाय बीन गाइस? बीन इज नथिंग बट इज जस्ट नाउ दिया है, नया नाम दिया है, कुछ नहीं, जस्ट इट इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही है, बट is managed by not Peras object which is managed by Spring. कोई भी ऑब्जेक्ट which is managed by Spring is called as bin. आपका कार क्लास का ऑब्जेक्ट हो या आपका स्टूडेंट हो, if the object creation is managed by Spring, I'll say just a bin. Simple. ठीक है, so any object in Java application, if that is getting managed by the Spring, that object is called as a bin. सिंपल टर्म है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. So any object in Java which is managed by the Spring is called as your bins in Spring framework. उसको कुछ नया नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं हो ना. ये जो bins है, ये डेवलप हुए on the Pojo objects only. So what is Pojo now, sir? So plain old Java object. तो Pojo होता है, नहीं तो Poji as well. So Poji is your plain old Java interfaces. ठीक है. So Pojo and Poji. So it works on the concept of Pojo and Pojis, where you just have normal Java, any Java object which has some attributes and it has some getters and setters, right? Those are just called as a Pojo objects. Basically, simple Pojo objects of the Java. Any objects of Java you can call is a Pojo object. Been just given a new name in the Spring world where it is managed by the Spring. That's it. Okay. So what you will going to do is, we'll first go to the Spring Boot. Okay, we'll go to the first Spring Boot. We'll create a simple Spring Boot project. We'll understand how Spring Boot does the dependency management. Okay, and then we'll go to the Spring. We'll learn the Spring. हम थोड़ा उल्टा करेंगे आज, ठीक है? पहले Spring नहीं सीखेंगे हम. Spring Boot पहले हाई लेवल पे एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर देखेंगे डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करनी है और कैसे इंजेक्ट करनी है और कैसे एप्लीकेशन कंटेनर को हम यूज कर सकते हैं, आईओसी कंटेनर कैसे यूज कर सकते हैं. At a high level we'll see that, and then we'll move to the Spring framework of how to create objects and everything with the XML and everything. Okay, so now before moving to this object creations and everything, there are a couple of other things where you need to understand, right? So जैसे कि this something called as a container, right? जिसकी मैं बात किया था, right? आईओसी कंटेनर. स्प्रिंग क्या है? आईओसी कंटेनर है. वैसे आईओसी कंटेनर मतलब क्या है गाइस? कंसिडर करो एक बॉक्स है आपके पास ऐसे. कंटेनर क्या होता है? इस जस्ट वन बॉक्स, राइट, जिसके अंदर क्या करते हो आप चीजों को स्टोर करते हो. तो कंसिडर करो दिस, ये ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है. तो आपका जो जेवीएम है पूरा, ये जो जेवीएम है, लेट्स से बाहर का जेवीएम है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? एक छोटा सा कंटेनर बना रहे हो. ठीक है, विच इज स्प्रिंग कंटेनर. दिस इज योर स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, जिसके अंदर क्या कर रहे हो? पूरे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, मतलब क्रिएट करके उसको मेंटेन करके रख रहा है. आप जब भी चाहिए आपको, आप उसको बस पूछना है मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, वो रिटर्न करेगा आपको. ठीक है. सो दिस इज अ कंटेनर जहाँ पे जेवीएम के अंदर ही एक मेमोरी स्पेस है, विच इज अ कंटेनर स्पेस, जहाँ पे इन मेमोरी में अंदर क्या हुआ है, वो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जाता है. ठीक है, तो आपको जैसे चाहिए तो आप क्या करोगे? उसको पूछोगे कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, बस उसको पूछना है, आपको ऑब्जेक्ट दे देगा. ओके. नाउ सर, ये विजुअली ऐसे हम देख रहे हैं, बट इसका प्रोग्रामेटिक क्या है? प्रोग्रामेटिक क्या है? देयर आर टू क्लासेस, समथिंग कॉल्ड एज अ bin factory, and there's something called as a application context. तो ये जो दो इंटरफेसेस है, दो क्लासेस है, which represents actually IOC containers. So these are the your IOC containers.
If somebody asks you, hey, okay, you know the IOC container concept. This is like inversion of control where this programmer flow is decided by framework rather than programmer, and it is a container object where all the objects are stored, and you just ask them to return the object. But can you tell me which are the classes which actually tells that this is a container? So these are the classes. We have bin factory and we have application. So these are the actual containers. मतलब मेमोरी के अंदर मैं बोल रहा हूँ ये मेमोरी कौन है, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक बड़ा कंटेनर है, तो ये कंटेनर मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बराबर है। वी हैव बिन फैक्ट्री। अभी बिन फैक्ट्री वाज द जो बिन फैक्ट्री है, इट वाज अ वन ओल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। This was the old, and it has only limited support of some of the features of the container. Whereas the application context है, ये new है, but it also supports, because जो भी bin factory features provide करता है, वो application context support करता है, plus some additional new features also provide करता है। It also provides your internationalization, you have the context mapping, event handlers, lot of things has been provided by your application context. इसलिए हम कोड के अंदर भी बिन फैक्टर यूज नहीं करने वाले, विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट will be using the application context rather than bin factory, but both serves the same purpose. Only thing is application context is more advanced, it's a more superset of your bin factory. Superset मतलब क्या, bin factory जो प्रोवाइड करता है वो तो प्रोवाइड करता है, बस एक्स्ट्रा कुछ चीजें और प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट्स योर bin factory. All right. So we'll be using application container, application context as an interface, which acts as your basically container in the Spring ecosystem. Okay. So that's your container. Now ये जो बिन, जिसका मैं बिन की बात कर रहा हूँ, राइट, जो बिन क्रिएशन करते हैं हम स्प्रिंग के अंदर, इस बिन क्रिएशन करने के लिए वी हैव डिफरेंट वेज टू क्रिएट द बिन्स। एक होता है समथिंग कॉल्ड एज एक्सएमएल फाइल बेस्ड। आप एक्सएमएल फाइल बनाओगे, उस एक्सएमएल फाइल के अंदर आप बिन डिफाइन करोगे, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। या आप यूज कर सकते हो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। या थर्ड वे होता है एनोटेशन बेस्ड। You can do the bin creation with the help of XML files. You can use a Java-based configuration, or you can use annotation-based. So we'll see first annotation-based in a Spring Boot. ठीक है, we'll see in the Spring Boot, और फिर हम मूव करेंगे एक्चुअल कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, जहाँ पे हम एक्चुअल कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करेंगे, वहाँ पे स्प्रिंग बूट यूज नहीं करेंगे हम। तो वहाँ पे हम सीखेंगे XML फाइल को कैसे करना है, जावा बेस कैसे करना है, so that we understand what is happening behind the scene as well, right? हमने खुद सीखा है, जो मैंने खुद सीखा है एक्सएमएल थ्रू सीखा है, पहले स्टार्टिंग हमने एक्सएमएल से की थी। आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि हर ऑब्जेक्ट, हर प्रोजेक्ट आपको स्प्रिंग बूट वाला ही बने मिले, राइट। कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर एक्सएमएल फाइल यूज किया, तो यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ बीन्स इन एक्सएमएल फाइल एज वेल। We know the code, but how do we create with the XML as well, right? So that's the high level idea of the how to create a different beans and everything. Okay, type 2 in the chat if you understood so far all the concept that has been talked about. So now let me stop sharing this screen. Let's go back to your code window now. All right, so let me share the screen. Okay, now before I start any coding, right, let's visit the website of a Spring, right? Spring.io. So this is the website of a Spring, official website of the Spring, okay, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा स्प्रिंग के रिलेटेड, ठीक है। नाउ दिस इज ओन बाय द VMware। पहले पाइवोटल करके कंपनी थी जो पहले स्प्रिंग को ओन करती थी, बट नाउ इट इज ओन बाय योर VMware कंपनी, ठीक है। नाउ बट इफ यू सी द मोमेंट यू कम हियर, इट सेज स्प्रिंग मेक्स जावा प्रोडक्टिव, right? It says more reactive, it helps you to do the faster development, it's simple and everything, right? So it has a lot of things. Now what Spring can do, it can do a lot of things. You can develop the microservices with the Spring, you can do the reactive based asynchronous programming, right, जो हम threading के अंदर करते थे। It can also interact with the clouds, right? You can develop the web applications like responsive applications. You can also use it with the serverless like AWS lambdas kind of thing.
इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लाइक यूजिंग रैबिट एमक्यू, काफका, इसे कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग करना है आपको, कुछ चीज़ ऐसे एज अ जॉब करके रन करनी है बैकग्राउंड के अंदर, यू कैन डू ऑल्सो बैच प्रोसेसिंग। So there are a lot of things can be done with Spring, right? Again, they have created a simple Spring Boot application here, telling how can be used, right? So see, if you look at the Netflix का ये जो बंदा है क्या बोल रहा है देखो, most of our services today are all based on Spring Boot. I think the most important thing is the Spring. It just has been very well maintained over years. That is important for us for the long time because we don't want to be switching to the new framework every 2 years. This is very important, right? स्प्रिंग मार्केट के अंदर आज 20 साल से खड़ा हुआ है, राइट? इट हैज़ बीन मेंटेन वेरी वेल, दैट्स व्हाई इट्स वेरी पॉपुलर। कंपनी हर बार पैसा खर्च नहीं करेगी आपको, हर कि एक फ्रेमवर्क आया, चलो अभी ये जा रहा है मार्केट से, चलो नया फ्रेमवर्क लेके आओ। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द कंपनीज, उसका बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा उनको, कैसे करना पड़ा तो। सो वी नीड अ फ्रेमवर्क विच इज स्टेबल इन द मार्केट, विच इज स्टेबल इन द कंसिस्टेंट, इट प्रोवाइड्स द न्यू फीचर्स, इट फिक्सेस एवरीथिंग, इट इम्प्रूव्स ऑन इट, राइट? सो वी नीड द फ्रेमवर्क। तो पूरा जो नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो, आज आज वर्ल्ड वाइड, आज एवरी कंट्री यूज नेटफ्लिक्स। अब पूरे दुनिया के अंदर नेटफ्लिक्स यूज किया जाता है, राइट? जो स्प्रिंग जो जो नेटफ्लिक्स का बैकएंड है, पूरा बैकएंड स्प्रिंग पुट के थ्रू यूज किया गया है। It has been developed, all the microservices which you see in the Spring, so sorry, my Netflix has been designed with the Spring only. Okay, thus this is very popular, right? If you have a good understanding of the Spring, I'm sure you'll have the lot of opportunities in market for the your Spring once you could to have understanding of the Spring Boot and everything, right? So that's why it's very important that you understand the Spring Boot, and our next 10 or 15 days, next के मतलब क्या, आगे वाले 10-15 दिन हम स्प्रिंग ही देखने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं देखेंगे, विल ओनली टॉक अबाउट स्प्रिंग। ठीक है? सो डोंट मिस एनी अदर क्लासेस हैपनिंग ओवर पीरियड टाइम, यहाँ से आगे कोई भी क्लास मिस मत करो। अगर पीछे वाला मिस किया है, रिवाइज करो लेक्चर जो भी किए हैं, बिकॉज स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, बट उसके अंदर हम कोर जावा यूज करने वाले हैं, कलेक्शंस यूज करने वाले हैं, एक्सचेंज हैंडलिंग यूज करने वाले हैं, आपके कोर प्रिंसिपल्स जो है कोर जावा के अंदर, जो लाइक लूजली कपल्ड डिजाइन एंड एवरीथिंग वी हैव बीन टॉक्ड अबाउट इट, विल बी यूजिंग सेम प्रिंसिपल्स हियर एज वेल। फ्रेमवर्क ने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके दिया है, बट अंदर क्या यूज कोर जावा यूज होने वाला है। ठीक है? सो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी क्लास गोइंग फॉरवर्ड, ओके? एंड इफ यू मिस्ड इट बाय सम वे, मेक श्योर यू रिवाइज एंड देन कम टू द लेक्चर। ठीक है? डोंट कम डायरेक्टली ब्लाइंडली, especially my classes. ठीक है? If you want to skip other classes, that's fine, don't miss my classes. You know the importance of those classes that I'm taking, right? Okay, so now what are the projects has been evolved in the spring, right? So if you go to the project section, you see there are different projects has been created here. If you go to the overview, let me see what are the projects that has been developed in the spring ecosystem. We have spring framework जो हम बात करने वाले हैं. This is the latest version of Spring. We see is 6.2.3, which is 6.x, जिसकी मैं बात कर रहा था, right? So Spring framework currently runs on the 6.x version. Whereas Spring Boot is also another framework which is developed on the top of Spring, which right now works on the 3.4 version, which is the latest version, right? With the Java 21 version. Now there are other projects which has been developed with the Spring ecosystem, like Spring Data, which provides you a consistent approach to data access, right? It also can work with the Hadoop and other things. MapReduce दिख रहा है यहाँ पे, MapReduce मतलब क्या है, Hadoop and everything that can be worked with Spring. Spring Cloud के साथ integrations है, Spring Cloud Data Flow है, Spring Security जिसकी मैं बात कर रहा था, right? Spring Sessions, Spring with the GraphQL, Spring with authorization, so like OAuth 2 and OpenID जिसकी मैं बात कर रहा था, security and authentication, right? Spring Session Management also provides the session management. Spring integration supported with all the enterprise level bus systems. Monolith also kind of a new framework which is like providing some application architecture guidelines. Monolith से provide किए जाते हैं. Spring ये REST है. To develop the REST applications or MVC based application can use this some documentation part of it. Spring AI artificial intelligence के अंदर भी Spring चल रहा है. मतलब कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मॉडल से LLM या कुछ उसके साथ भी इंटीग्रेशन उन्होंने डेवलप किया है स्प्रिंग एआई के साथ, राइट? स्प्रिंग बैच जिसकी मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, बैच प्रोसेसिंग करने के लिए एम क्योंकि एलडैप अपाचे कापका, स्प्रिंग सीएलआई, स्प्रिंग फॉर अपाचे पल्सर, स्प्रिंग वेब फ्लो प्रोवाइड किया है, स्प्रिंग शेल है, स्प्रिंग वेब सर्विसेज है. There are a lot of things which are being developed in the Spring. These are different projects being developed. We'll be learning what Spring Framework, Spring Boot.
तो स्प्रिंग बोट के साथ फिर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, स्प्रिंग डेटा वगैरह सब करेंगे उसके बाद, ठीक है। Obviously it's not easy to learn everything, and you should not learn everything here, all the thing you are not going to use everything. It depends on how to use it, but you should know the core concepts and basic fundamentals and developing the spring boot applications, right? uh, Again, these are the release calendars which is they have mentioned, and okay, what are the releases happening, when it is going to happen and everything. You can see here spring framework अभी 6.0 चल रहा है, तो they are also developing 7.0, they are also working on that, right? So they might release something new in future, right? So these are the different release calendar they have. Okay, going that, now move to the spring framework. If you click on this, you see the good documentation here. What is documentation, sir? तो अब अगर स्प्रिंग सीखना है आपको, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फीचर्स के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा था, कोर टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, इवेंट, रिसोर्सेस, I18 दिख रहा है विच इज इंटरनेशनलाइजेशन है, दिस इज योर इंटरनल। ये जो 18 नंबर आया है, ये क्यों आया है यहाँ से? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये वर्ड टाइप करो आप। जो आई, फर्स्ट लेटर आई है, लास्ट में क्या है ये नहीं, दोनों के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं? 18 आते हैं, इसलिए यहाँ पे I18 नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज इंटरनेशनलाइजेशन, रिसोर्स फाइल्स, वैलिडेशन फ्रेमवर्क है, डाटा बाइंडिंग है, टाइप कन्वर्जन है। टेस्टिंग के लिए मैंने जिसकी बात कर रहा था, मॉकिंग फ्रेमवर्क से, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट लाइक वी हैव द मॉकिंग टू यूनिट एंड एवरीथिंग। डाटा एक्सेस जिसके बात कर रहा था, अगेन ट्रांजेक्शंस, डाउ सपोर्ट किया है, JDBC सपोर्ट किया है, ORM सपोर्ट किया है, मास्टर एक्सेल प्रोवाइड किया है, Spring MVC has supported integration with like the CA, JMX, task scheduling, cache, observability, different languages के अंदर आप कोड कर सकते हो। Kotlin यूज कर सकते हो, Groovy यूज कर सकते हो, और एनी अदर लैंग्वेज जावा के साथ तो कर ही सकते हो, बट इट आल्सो सपोर्ट फॉर Kotlin and Groovy languages, right? That's why it's a very very popular framework, right? Now if I want to see the core technologies and go ahead here, you see the official documentation of Spring framework. तो यहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है स्प्रिंग का। अगर आपको स्प्रिंग सीखना है, यू कैन गो ahead and learn this documentation here, right? It covers core technologies. So if I just तो IOC कंटेनर यहाँ पे जाता हूँ, तो इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन की इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्रिंग IOC कंटेनर क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कंटेनर, व्हाट इज बीन्स, राइट, व्हाट इज कंटेक्स्ट, जिसके अभी मैं बात किया था, आपको याद है? IOC कंटेनर कौन से स्प्रिंग के अंदर? वी हैव टू IOC कंटेनर, दे कॉल इज अ bin factory and there is a application context. So bin factory interface provides some advanced configuration mechanism capable of managing the any type of object. एप्लीकेशन इज अ सब इंटरफेस ऑफ बिन फैक्ट्री, मतलब क्या, जो ये प्रोवाइड करे ये तो करे ही करेगा, प्लस एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि OOP इंटीग्रेशन फीचर प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनलाइजेशन आप कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को आप लोड कर सकते हो। इट इन शॉर्ट, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज समथिंग विच विल बी यूजिंग इट कंपेयर टू बिन फैक्ट्री, राइट? सो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ऐड मोर एंटरप्राइज स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, इसलिए हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, रादर देन दिस वन। सो यू कैन सी दैट इट हैज प्रोवाइडेड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? नाउ इफ आई गो टू द कंटेनर ओवरव्यू, you see the this diagram. It has very good documentation that you can refer to, start with your designing the everything. Okay, so we'll be talking about this, and this container, what is container, what is this class path XML application context क्या है, we'll be talking through it over now next 10-15 days, okay? So that you understand the basic fundamentals of the Spring, and then go ahead, right? So, and this is the way we can configure it. एक होता है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसके मैं बात कर रहा था। बीन्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद 3 ways: XML, जावा बेस्ड एंड एनोटेशन बेस्ड। क्या है क्या नहीं है, विल सी दिस। ओके, सो दिस इज XML, this is how you create it and then you inject it, okay? We'll talk about this later on, okay? Any questions so far? So far so good, guys. Type 3 in the chat if you have understood so far the Spring framework at a high level. I'll be back in 2 minutes.
All right. So now what we're going to do is now we'll create simple Spring Boot application first. Okay, now we'll understand how the Spring does do it, and then we'll see the how the Spring framework actually does. Okay, so what I'm going to do again to create a Spring Boot application, you go to the start.spring.io website. यहाँ से आप जा सकते हो वहाँ पे जाके if you are using you know Eclipse or you are using IntelliJ Community Edition, you can directly go to this website. Maven यहाँ पे Maven सेलेक्ट करना है, Java सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज करना है 3.4.3. डोंट यूज दिस अगेन स्नैपशॉट M2 वगैरह, यूज 3.4.3. यहाँ पे आपको ग्रुप आईडी दे सकते हो वट एवर यू वांट टू प्रोवाइड, राइट. आई कैन जस्ट स्प्रिंग बूट डेमो वट एवर यू वांट टू प्रोवाइड. यहाँ पे पैकेजिंग जार करना है. आप जावा 21 यूज कर रहे हो, बस यहाँ पे जाके करना है, जनरेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना. डोंट नीड अ डिपेंडेंसी. ओके, मे बी आई नीड one dependency for a web because I need a Tomcat. Yeah, because I just want to get started so that you can create it. Once you do that, what you have to do, you have to just extract that project. बराबर एक्सट्रैक्ट करके क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, राइट. वो ये वाला एक तरीका है. या अगर आप अल्टीमेट यूज करें तो ऑब्वियसली कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ स्प्रिंग बोट. अगेन यहाँ पे आपके आईडी के अंदर हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो. आई एम यूजिंग अल्टीमेट एडिशन ऑफ द आईडी, सो आई हैव दिस सपोर्ट. बट कम्युनिटी के अंदर नहीं है तो मैंने आपको वो तरीका बताया, वहां से भी कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो. अल्टीमेटली यहाँ से आता है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ से आता है. तो वहां से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो. बट लेट्स से यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, राइट, उसको यूटिलाइज करते हैं. तो सॉरी, डाउनलोड्स, तो स्प्रिंग बोट डेमो हमने अभी एक सेट किया. उस फाइल को करना क्या है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सोर्सेज बोलना है बिकॉज अभी मैंने कुछ तो डाउनलोड किया ना, उसको यूज करके बनाना है. फाइल से प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज. अगर नया बनाना है आपके आईडी के अंदर तो न्यू प्रोजेक्ट करो. बट इफ यू हैव ऑलरेडी ए प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट से प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज. तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट चूज करना है विच इज स्प्रिंग बोट डेमो, इस फोल्डर को चूज करना है बस. ओपन बोलो. यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है मैवन बेस्ड है, सो मैवन चूज करो ऐसे न्यू विंडो. So create this project in a new window. That's it. So it will resolve the dependencies if there are any. Depends on which version you have used in the past. इसका स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है. अगर आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया 3.3 3.4, it might take some time to download those dependencies and everything and set that up everything. Okay, so depending on your machine speed and download structure and memory project that you have created, it can vary. Okay. So once you do that, I can go to, you can see here, you see here some sort of external libraries, not external libraries, but yeah. Okay, let me see here. Okay, so we can see it has been downloaded, refreshed. I can go to Maven. एक बार यहाँ पे Maven पे जाके क्या करते हैं, लाइफ साइकिल पे क्लिक करते हैं बिकॉज हमने नया प्रोजेक्ट डाउनलोड किया तो आई नीड टू हैव समथिंग न्यू to be created here. Okay, so right, not downloading a lot. Just a moment. Uh, it's taking time to compare this. Okay, now might happen that I want this to be created with the Maven SCM. Okay, why do you need this? It might be downloading. Okay, just give a moment, guys. Okay, because of some machines. Just took a minute. This issue will not be for you guys because this issue is because of my face.
should have worked. I don't know whether in the past it has worked. Why it is stopped working? But let me see. Let me connect and see if that works. Taking too much of time. So rather than using that project, I think what is happening is I am not able to download the dependencies of this because of some uh, office laptop uh, VPN issue. Okay, so it's not allowed to go to internet and download something. That's fine. I think we had some project, if you guys remember, movies. So what you can do, you just create a Spring Boot project, simple project बनाओ वहाँ पे सेम स्ट्रक्चर आने वाला है। यहाँ पे भी एक मूवी सर्विस एप्लीकेशन है, वहाँ पे क्या आएगा आपको स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन आएगा सेम। दिस इज ऑल्सो स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन। What I wanted to talk about is okay is let's say now we have created this project, right? Now let's say I have one class. I want to create this as a bin. Okay, so यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, I'll be creating a okay, let's do one thing. Model के अंदर क्या करते हैं, we'll create a new class. Now you can create a package and you can create a class as well. Let's say I have car class. Okay, now car has we have public car. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बस I'm just writing the simple car constructor. Okay, it's called. Okay, that's fine. Now you created the car object. You have some car here. Now, let's say you have this particular class. Now, in general, how do we create the object? As a developer, as a programmer, we will create object of the car class. Let's say car is equal to new car, and you say you call that method car dot drive it, right? So let's say अभी ये method हमारे पास नहीं है, but let's create this method here. And let's just type here that okay driving the car. Okay, that's fine. Now in general जब application बनाते हैं आप spring non-spring application, so we create object like this, then we call a method on this, right? And if I run the application, I should be able to see the output here as well. So let's see, I can see car constructor is called, object बनाया आपने बराबर यहाँ पे, and you are calling the method on that object. Now spring क्या बोलता है, as I told, right? Spring बोलता है this object creation you should not take care of it, this will take care by myself. ठीक है, तो myself मतलब क्या, उसको कंटेनर चाहिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रखेगा, राइट? Now first of all you have to tell that okay I need that object to be created by spring. How can I tell that okay this object needs to be created by your spring container, right? By default, see it might happen that आपके पास ऐसे 1000 classes है, but do I need all 1000 classes to be managed by spring? May not, right? I have some classes जहाँ पे मैं खुद ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मॉडल ऑब्जेक्ट्स है या कुछ और ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे मैं चाहता हूँ उसको मैं यूटिलाइज करूँ, बट देयर कैन बी सम क्लासेस जो मुझे चाहता हूँ कि spring should manage the classes, right? So in order to tell that hey spring, I'm not going to create this object, it's your responsibility to take care of that object creation, manage their life cycle and everything, right? Now I can go ahead to the car class and in order to tell spring, hey spring, create this object of this particular class and keep it with you. जब भी मुझे चाहिए, I'll ask for it and you just provide it. And in order to tell that spring that hey, this is a spring managed bin rather than user managed bin or programmer managed bin, you have to use something called as @, component annotation. तो हमने कार के ऊपर क्लास के ऊपर component annotation यूज किया, telling that spring that hey spring, you go ahead and manage the life cycle of this bin, you create object, put it into your container, जब मुझे चाहिए मैं उसको पूछ लूंगा तो मुझे दे देना। तो उतना आपने कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है सर, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल रहेगा। बट सर देन हाउ कैन आई आस्क स्प्रिंग दैट हे स्प्रिंग कैन यू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कार क्लास, हाउ कैन आई प्रोवाइड?
So interestingly, as I mentioned, we have application. So we have to whom we have to ask. We have to ask the IOC container. बराबर है. ये कौन कर रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया आपने. Who is managing this object? Who is going to manage IOC container? IOC container कौन सा है जावा स्प्रिंग के अंदर? We have application context. याद है? तो जब आप स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो जो रन मेथड है, ये रन मेथड एक्चुअली रिटर्न करता है आपका एप्लीकेशन कंटेक्स्ट रिटर्न. It returns something called as a configurable application context. But let's see. So if you go to the run method, inside run method, it returns the type of the configurable application context. Now this itself extends from application context. So you can use the reference of the application context. बराबर है? So what I can do, whatever is returned, I'll just catch here. Application context. Okay. So we have to have application context. Now application context कौन सा यूज करना है गाइस? देखो बहुत सारे क्लासेस है. डोंट यूज अपाचे कैटलिना. हमको कौन सा यूज करना है? org.spring framework.context ये वाला यूज करना है. नहीं तो आप ये इंपोर्ट करोगे सब बोलोगे सर हमारा कोड नहीं चल रहा है. मेक श्योर इंपोर्टिंग राइट application context, right? So you have to use org.springframework.context application context. Say application context. उसको इसे वेरीफाई कैसे करोगे? यहाँ पे एक्सपांड करोगे तो विल सी दैट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ राइट पैकेज के अंदर से. ठीक है, एक तो आना निकाल देता हूँ जो भी रहेगा. ठीक है. Now once you got the context, now I can ask, hey Spring, I'm looking for a car class object. Can you provide me? In order to ask it, you have to say context dot method called as get bin. ठीक है. Either you can provide the name of the bin by ID or you can provide the type of the class. Basically, I'm looking for, I'm looking for a car class. I can just provide the car class. तो क्या करेगा? अगर मिलता है तो इट विल प्रोवाइड. जो भी आएगा I'll just assign it here and I can use it. Let's try to run this. अब हमने न्यू किया क्या? As a user, as a programmer, have you created the object? No. Who is creating object now? Spring. मैं इसको स्प्रिंग को पूछ रहा हूँ, तुम स्प्रिंग तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट मुझे दे दो. लेट्स रन दिस. This will stop the application, it will run it. You can see car constructor is called. यहाँ पे पहले कॉल हुआ है. देखो हमने क्या किया, ड्राइविंग कार मेथड कॉल किया तो आई कैन सी. तो आपको पता है कार कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? उसका ऑब्जेक्ट बनेगा. मतलब बट मैंने यहाँ पे न्यू नहीं लिखा ना सर. बट यहाँ पे न्यू कैसे नहीं लिखा? आपने नहीं लिखा है. तो स्प्रिंग क्या कर रहा है? आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है. तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. तो जैसे भी स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, वो क्या करता है? आपके देखता है आपके क्लासेस के अंदर आपने कहीं पे एट कंपाउंड वगैरह यूज किया है क्या. विच मीन्स हमने स्प्रिंग को बताया है स्प्रिंग है स्प्रिंग. You need to manage the object creation and life cycle of this particular class by you, not me. ठीक है. तो ये करने के लिए हमें क्या करना है? कंपाउंड. और जब आपको चाहिए स्प्रिंग के साथ से कि स्प्रिंग को पूछना है कि मुझे स्प्रिंग कंटेनर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप यू कैन कॉल अ मेथड कॉल्ड एज गेट बिन ऑन द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट. व्हाट इज एप्लीकेशन कंटेक्स्ट? एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज योर आईओसी कंटेनर. ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखो, इसको भूलो मत. एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज योर आईओसी कंटेनर. ठीक है, जो एक्चुअली मैनेज करने वाला है सब कुछ. तो दिस इज इन मेमोरी स्पेस जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट पूरे स्टोर हो जाएंगे. एंड आई कैन ऑलवेज आस्क हे कंटेक्स्ट ओके गिव मी द बिन ऑफ टाइप ऑफ कार क्लास. तो जो भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट मुझे उसका रेफरेंस दे दो. तो वो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. वंस यू गेट द रेफरेंस यू कैन कॉल द मेथड व्हाटएवर यू हैव. ठीक है. टाइप 5 in the chat if you understood this application context stuff. One left to the array. Swapnil. Hi, sir. Okay. Now, once you have this, now I am asking the spring and everything. I'm getting the bin, and that's how the spring is managing the bin. तो यहाँ पे ये जो कार क्लास है ये पहले नॉर्मल क्लास था. ये नॉर्मल क्लास था, उसको हमने बिन बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट. क्यों? बिकॉज दिस इज अ क्लास इज गोइंग टू मैनेज बाय होम स्प्रिंग. आपको पता है एनी ऑब्जेक्ट विच इज मैनेज बाय द स्प्रिंग इज कॉल्ड एज बिन इन स्प्रिंग. तो दिस बिकम योर बिन. हो गया आपका बिन, खत्म. ज्यादा कुछ नहीं इसमें अंदर, सिर्फ नाम अलग दिया है. कंफ्यूज मत हो जाओ, नॉर्मल क्लास ही है. बस उसको उसका लाइफ साइकिल कौन मैनेज करेगा? अभी स्प्रिंग करेगा, मैं खुद नहीं करूंगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन ask your context and get the bin.
सर अगर मैंने और एक बार पूछा तो इसको क्या आएगा मेरे पास? मैं बोलता हूँ मुझे और एक बार चाहिए कार, तो ये कार 1 है कंसिडर करो, ये कार 2 है, तो क्या होगा कैसे यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी टाइम योर कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल? आपने 2 बार बोला है उसको। हाउ मेनी टाइम्स द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड? ठीक है, लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी। ठीक है, तो थोड़ा इसके लिए आपको, जब हम कल सीखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है, आपका एक बार ही कॉल हुआ है, मतलब, और आपने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ मेथड कॉल किया, विच मीन्स सर यहाँ पे जो मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पूछ रहा हूँ, तो इज नॉट क्रिएटिंग न्यू क्लास ऑब्जेक्ट, नो। उसका क्यों करा ऐसे, क्या है उसका बिहेवियर वगैरह, विल सी यू टुमारो। ठीक है, कल हम उसके अंदर देखने वाले स्प्रिंग प्रोजेक्ट बना के अंदर कैसे बिहेव करता है, व्हाट इज दिस। थोड़ा सब्र रखो, व्हाट इज हैपनिंग है, विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, इट्स जस्ट दैट आप क्या कर रहे हो, कंटेनर को पूछ रहे हो, कंटेनर मुझे बिन दे दो ऑफ टाइप ऑफ कार, एंड विल गेट द, जो भी उसके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा, आप उसको कैच करोगे, उस ऑब्जेक्ट यूज करके यू कैन कॉल द मेथड व्हाट एवर यू वांट। ओके, सो दैट्स द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, दिस इज आईओसी, जहाँ पे the flow of application is not decided by you, but the flow of the application is controlled by your framework। तो framework उसको ऑब्जेक्ट बना के रखा है, अब उसको पूछ रहे हो बस मुझे ये चाहिए, that's it, just asking it, you're looking at the object, right, other than you creating the object। so the flow is basically decided by framework rather than you। अगर फ्लो मैं डिसाइड करता खुद, तो मैं कार का ऑब्जेक्ट मैं खुद बनाता, उसके डिपेंडेंसी वगैरह मैं खुद इंजेक्ट करता। ठीक है, सो और एक चीज बता सकते हैं, राइट, लेट्स से अभी कार के पास इंजन है, राइट, कार को इंजन चाहिए, तो आप क्या करते हो, वी क्रिएट अ क्लास इंजन। आप इंजन के पास क्या है सर, इंजन के पास भी लेट्स, इसका भी कम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सो बट फॉर द पर्पज ऑफ displaying it, engine, just to show you something, some more example here, dependency injection, engine constructor is called, and let's say I have a method called as start engine, okay, because before I start, so this is engine started, and I also have the stop engine, engine is stopped, okay। एंड कार को क्या करना है बेसिकली, नाउ let's look at the engine first, okay। now what I want spring to manage the life cycle। अभी एक ऑप्शन क्या है आपके पास, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, इज इक्वल टू न्यू इंजन, ये खुद खुद करो, और इंजन के ऊपर बोलो स्टार्ट इंजन, या इंजन डॉट स्टॉप द इंजन, ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। या मैं स्प्रिंग को बोल सकता हूँ, हे स्प्रिंग, I'm not going to create the object, it's your responsibility to create it, in order to tell that, hey, now I'm not going to create, it's your responsibility to manage, I'm going to say to spring that, hey, this is your responsibility to take care of it. Now I'm going to ask spring, if you have created it, can you provide me with the help of context dot get bin of what type, engine type। तो मुझे तुम्हारे पास जो इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है टाइप का, वो मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करो, तो यहाँ पे रेफरेंस आए, once you get a reference you can call the method। let's try to run this। अभी दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, अभी दोनों रिलेटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, बट लेट्स सी इफ दे वर्क्स। एज यू कैन सी, कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, आप कार दो ऑब्जेक्ट कॉल किए थे, एज यू कैन सी यहाँ पे इंजन का ऑब्जेक्ट मिल गया, वी आर एबल टू कॉल द मेथड स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड, राइट। अगर आपने ये नहीं किया होता, लेट्स से आपने किया नहीं होता, तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चलता कि उसको मुझे मैनेज करना है, बिकॉज आपने बताया नहीं ना उसको। तो अगर मैं इसको स्टॉप एंड रन करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज स्प्रिंग को इसके बारे में पता नहीं है, तो विल नॉट फाइंड द बिन। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आएगा, नो सच बिन डेफिनेशन एक्सेप्शन। तो बोल रहा है कि मुझे ऐसा कोई बिन नहीं मिल रहा है जिसका टाइप इंजन है, मेरे कंटेनर के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिकॉज आपने उसको बोला ही नहीं ना उसको मैनेज करने के लिए। तो यू हैव टू टेल द स्प्रिंग, यू हैव टू मैनेज दिस, इसलिए आपको नोटिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। But hey, you know to create this object and keep it in your memory or your container. So when somebody asks you, you should provide it। So जब मैं run करता हूँ फिर से, I'll get that object directly and I can use that object for your calling methods। Okay, so that's the beauty of your using annotations here, which is just tell the spring you have to take care of it। Now, sir, ये ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, but let's say
इंजन को कार को इंजन चाहिए ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, से ओके प्राइवेट, इससे मुझे इंजन चाहिए, उससे इंजन, इंजन इज इक्वल टू न्यू इंजन, दैट्स हाउ यूजुअली डू। एंड मुझे अगर कार स्टार्ट करना है, ड्राइव करना है, तो मुझे पहले इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ड्राइव होने के बाद मैं इंजन को स्टॉप करूंगा। तो ये मेरा नॉर्मल बिहेवियर है, राइट। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट करने के बाद आई हैव पुट सम टाइम कि मैंने 2 सेकंड के लिए कार, या 2 सेकंड के लिए मैं कार ड्राइव किया, एंड फिर उसको मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। सो आई एम ड्राइविंग द कार हियर फॉर 2 सेकंड, एंड देन आई एम जस्ट पुटिंग द सम बिहेवियर्स हियर, ओके, आई वांट टू स्टार्ट द कार। अब आप जब कॉल करोगे यहाँ पे मूवी एप्लीकेशन, आई जस्ट डू वन थिंग, ठीक है ना, यहाँ पे ना आई पुट द कमेंट, और यहाँ पे भी मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगेन गिव मी द कार क्लास ऑब्जेक्ट, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर आपने डाल में से कॉल किया, तो कार क्लास के अंदर हमने क्या किया ऑलरेडी, कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, खुद बनाया, ठीक है, यहाँ पे न्यू करके बनाया, ठीक है, विच इज फाइन। तो हमने ऑलरेडी बनाया, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास इंजन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब आप ड्राइव मेथड कॉल करोगे, इंजन के पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एंड यू कैन कॉल द स्टार्ट इंजन मेथड। सो लेट्स रन दिस, पर इसको रन करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो आई एम एबल टू स्टार्ट द कार, राइट, इंजन का ऑब्जेक्ट बनाए, बट यहाँ पे आपके से इंजन स्टार्ट हुआ, अब ड्राइव करे कार, कार ड्राइव हो गया, इंजन स्टॉप हो गया, दिस इज गुड, ठीक है। बट लुक एट दिस, हमने क्या किया इस डिपेंडेंसी को, कार हैज अ डिपेंडेंसी ऑन इंजन, जब तक आप इंजन नहीं रहेगा, अगर मैंने इंजन से पैसे डिक्लेयर किया, मैंने ऐसे डिक्लेयर किया, कैन आई, मतलब जो जैसे डिक्लेयर मतलब क्या, जैसे मैं ऐसे डिक्लेयर किया, जैसे इंजन डिक्लेयर किया, कैन आई कॉल द स्टार्ट इंजन मेथड और स्टॉप इंजन मेथड ऑन द इंजन, नहीं होगा। क्यों, इंजन के जो रेफरेंस बना दिया, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या रहेगी, नल। तो अगर आपने न्यू नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, राइट। सो इफ आई रन दिस, आई गेट नल पॉइंट एक्सेशन, बिकॉज इंजन के अंदर नल है, राइट। सो इंजन का ऑब्जेक्ट बनेगा, बट जब आप कॉल करोगे स्टार्ट इंजन मेथड, इंजन नल रहने वाला है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली विल गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बराबर है ना। तो अगर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे, मैं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट बाय माई सेल्फ, ये नहीं, आई डोंट वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग by myself. I can ask Spring, hey Spring, I need an object of engine. Can you provide me? Can you provide me? तो Spring बोलता है I can provide you, बट आपको मुझे कुछ बताना पड़ेगा, मुझे चाहिए करके। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे बोलता हूँ, मैं मेरे क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो मुझे इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं सो दैट तुम इंजन प्रोवाइड करो, तो मैं इसको मैं इंजन यहाँ पे स्टोर करूंगा, राइट। एंड आई हैव टू टेल दैट, hey, to inject this, I can use something called as auto wire। तो मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंग को, हे स्प्रिंग, आई नीड अ इंजन क्लास ऑब्जेक्ट, आई नीड टू प्रोवाइड विथ माई कंस्ट्रक्टर। जब मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब तुम्हें इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करना है, सो दैट आई कैन गेट इन, एंड मैं उसको स्टोर करूंगा, सो दैट जब मेरे को ड्राइव इंजन करना है, मुझे कार ड्राइव करनी है, तो आई हैव इंजन ऑब्जेक्ट। एंड उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर से आई स्टॉप दिस एप्लीकेशन, एज यू कैन सी, मैंने क्या किया यहाँ पे, इंजन कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इंजन इज स्टार्टेड ड्राइविंग द कार, इंजन इज स्टॉप। बेसिकली यहाँ पे आपका इंजन का जो ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंडेंसी स्प्रिंग ने यहाँ पे आपके क्लास के अंदर इंजेक्ट की। आगे से किया, मैंने स्प्रिंग को बताया मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, एज अ यूजर आई डोंट हैव टू वरी अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट हियर। अगेन न्यू हट गया, तो किसी, हम न्यू जितना हो सकता है न्यू हम हटा रहे हैं यहाँ पे। थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट इज गोइंग टू डन बाय whom? Spring. Everything is done by Spring. You just have to tell them I want this object, create of the object. So this car has a dependency on engine, तो कार हैज अ डिपेंडेंसी ऑन इंजन। तो हमने क्या किया, इस डिपेंडेंसी को कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट किया, मतलब क्या होगा, इट्स अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। और ये एनोटेशन के थ्रू बहुत सिंपल है, अदर डॉट वायर कंपोनेंट वगैरह, ठीक है। अब इसको हम कल क्या करेंगे, विल सी थ्रू द एक्सएमएल, एक्चुअल स्प्रिंग देखेंगे। अभी हमने क्या किया, स्प्रिंग बूट के अंदर हमने बताया कि स्प्रिंग बूट के अंदर कैसे करते हैं, but we'll see this with the actual simple Spring framework. Spring Boot use नहीं करेंगे कल हम। We'll see the core concept. We'll be learning the Spring in a core nutshell. पहले सीखेंगे Spring अच्छे से, and then हम Spring Boot के ऊपर मूव करेंगे। But I just wanted to give the glimpse of what is coming on the way, right? So that's it for today. Type done in the chat if you understood all the concepts that is covered.
or if any questions, you can talk about it. राइट, सो कल आने से पहले एक बार ये पूरा प्रैक्टिस करके आ जाओ, जो मैंने आज किया ना, ये एप्लीकेशन कंटेस्ट वगैरह बनाया, जो रिवाइज करो लेक्चर, फिर से एक बार देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है कुछ चीजों को, आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ओके, ऑलराइट, Yes, sir. सो देन गाइस, थैंक यू।